Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome in Islamic learning course. Inshallah, today we will read Kalimah Radd Kufr. Kalimah Radd Kufr. What is meaning of Kalimah Radd Kufr? Kalimah Radd Kufr mean the rejection of disbelief. Rejection of disbelief. And first we will read in Arabic, and then we will read the translation in English, and then translation in Urdu. First of all is a word. Here is a Allahumma, is a standing zabar, and then here is ya madda and the madde munfasil, waw madda, and then izhar, here is idgham with gunna, standing zair, and alif madda, madde munfasil, standing there, and especially we will see here is ya madda, gunna, alif madda, waw madda, mad munfasil, standing zabar, the name of Allah, the heavy and standing zabar, waw madda, and the name of Allah is heavy. Now we will start, and Adila Sharif is with us today, and now first of all we will read in Arabic. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka lima la a'lamu bihi tubtu anhu wa tabarra'tu min al-kufri والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. MashaAllah. Now one time we will read with Ahmed Hassan. Adila Sharif, you go back, and then we will read translation in English. Now Ahmed Hassan come here, and now we will read in English, in Arabic first, and then translation. Assalamu alaikum Ahmed Hassan. How are you? Good. Alhamdulillah. Say Alhamdulillah. MashaAllah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma inni a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu bihi wa astaghfiruka lima la a'lamu bihi tubtu anhu wa tabarra'tu minal kufri والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش Say fawahish.
Good job. والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. MashaAllah, MashaAllah. Now we will read the translation of this. Okay, we will learn inshallah. Okay, Ahmed Hassan, go over there and we will read translation and we will understand the translation. What is this in kalima? Kalimah Radd Kufr mean rejection of disbelief. We rejected disbelief, kufr. Okay, and the wording, what is the wording and what is the translation of these words? Allahumma, the first word is Allahumma, mean, oh Allah, inni, indeed I. A'udhu bika, you know the simple rule of translation of Kabza is the meaning you. A'udhu bika, indeed I seek refuge from you. Oh Allah, I seek refuge from you. Mean, from an ushrika, worthing from shirk, the associating with Allah subhanahu wa ta'ala. If we make any partner with Allah subhanahu wa ta'ala, this is the shirk. Okay, from shirk, bika shay'un, anything, any false god, anything, if we do the partner of Allah subhanahu wa ta'ala, this is the shirk. Wa ana alamu, and I know about this, with knowingly, I know about this, and I seek refuge from Allah subhanahu wa ta'ala from shirk, and I am knowing about this. Wa, and astaghfiruka, and I seek forgiveness from you. Oh Allah, I seek forgiveness from you, lima, which la alamu bihi, which I am not aware of for this. Maybe unknowingly I do something wrong. That's why, oh Allah, I seek your forgiveness from you about the things which I am not aware of. And next is tubtu. This means I repent. Tubtu meaning I repent. I do tawbah anhu, from them. Wa tabarra'tu, I renounce, and I renounce from kufr, disbelief. I reject. Okay, and I repent from kufr. Kufr means disbelief. Shirk means shirk, associating with Allah subhanahu wa ta'ala with something. And wal kidb, and from lying. Okay, as a Muslim we speak truth, no lying. Wal ghibati, and ghiba mean backbiting. Okay, I repent from backbiting. Wal bid'ati, innovation, heresy. Wan namimati, mean the cursing or something. One mimati mean slander. Okay, slander. Wal fawahishi, shameful deeds. Okay, shameful deeds, bad deeds. Wal buhtani, and blame. Okay, false accusation. Wal ma'asi, and all sins. Kulliha mean all, and from all sins. Wa aslamtu mean I accepted Islam. Wa aslamtu mean I accepted Islam. Wa aqulu, and I say. Okay, and I am reading. I read what? La ilaha, there is no God. There is none worthy of worship illallah, besides Allah subhanahu wa ta'ala. We do worship only for Allah subhanahu wa ta'ala.
Okay, we do sajda only from Allah, for Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah, and Muhammad, blessings and peace be upon him, is the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the meaning in English. Okay, आओ अब हम इसका उर्दू में भी तर्जुमा करते हैं कि उर्दू में इसका क्या माना है। कलिमा रद्दी कुफ्र के कुफ्र का इनकार करना, कुफ्र को छोड़ देना, डिसबिलीफ, कुफ्र को छोड़ देना, इनकार कर देना, कलिमा रद्दी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ उस तमाम शिरक से कि मैं शिरक ना करूँ। मैं तेरी पनाह में आता हूँ शिरक से कि मैं किसी चीज़ को तेरा शरीक ठहराऊँ और मैं उसको जानता भी हूँ, जानबूझकर मैं कोई शिरक करूँ, मैं उससे तेरी पनाह में आता हूँ। और मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह तुझसे, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ उस शिरक से भी जो कि मैं ना जानते हुए कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं होता, ना जानते हुए मैं कोई, न जाने में कोई मैं कुफ्र कर लेता हूँ या शिरक कर लेता हूँ उससे। और मैं तौबा करता हूँ और मैं बरी होता हूँ, दूर होता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ, मैं उस चीज़ से दूर होता हूँ और मैं उसे तौबा करता हूँ। किस किस चीज़ से? कुफ्र से, शिरक से व शिरकी, वल किज़्बी, झूठ से, गीबत से, वल बिदाती, और इनोवेशन, बिदत से, बुरी बिदत से, वल नमीमती, और ताना जनी से कि मैं किसी को ताने दूँ, किसी किस्म के भी ताने दूँ, वल फवाहिश, और तमाम बुराइयों से, वल फवाहिश, बुराइयों से, वल बुहतान, और बुहतान से कि इल्ज़ाम तराशी करूँ, वल मासी, और तमाम गुनाहों से मैं उससे तौबा करता हूँ और मैं इस्लाम कबूल करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसको समझने और इसको याद करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।